A shocking case from Agra. An entire police station has been booked in case of alleged custodial death. 32-year-old Hemant Kumar reportedly died in police custody in Agra's Sikandra police station. Hemant's mother alleged that her son was assaulted in her presence. 3 police personnel have been suspended so far, and 2 of the victim's neighbors have also been booked for assaulting him before handing him over to cops. The neighbors claimed that Hemant had stolen jewellery worth rupees 7 lakhs. चोरी हुई है, उसको मारपीट करी है। किसने की थी मारपीट? पुलिस ने। पुलिस ने? कितनी बुरी तरह से मारा था? बहुत बुरी। अच्छा, आपको भी पुलिस ले गई थी? हाँ। Aishwarya Paliwal is joining me on the phone line. Aishwarya, UP police never cease to shock. Fake encounters, fake arrests, and now this custodial death of a theft accused. It seems that the policemen in the state think that they can mock the law. Well, definitely, this is a very shocking case that has come to the fore. And according to initial reports, before handing over Raju to the police, both the police constables had assaulted him with lathis. Now, also, the mother has gone on record and she said that her son was mentally weak and he used to work at the shop as a helper. Now, on Wednesday, the man alleged that her son had stolen jewelry worth 7 lakh rupees. The police had arrested him, and then in front of the mother, he was being assaulted. He was hit by lathis. The victim is no more, and now the entire police station has been booked, and investigation is still going on in this case. Also, Aishwarya, have you gotten in touch with the family of the deceased? What are they alleging? What are they saying? Well, the mother has gone on record and she has explained how her son was mentally weak. She also said that her son used to work at a chemical shop, and the owner of the shop was the one who had filed a complaint against him, saying that he had stolen jewelry worth 7 lakh rupees. And it is after this complaint that 2 police constables picked him up from his rented house, and then in the police custody, they tortured him, and this torture took place in front of Raju's mother, whose name is Renu. Renu has come on record and said that the policemen assaulted him, hit him with lathis, which ultimately led to his death. Thank you, Aishwarya, for these inputs. I am now being joined by Vikram Singh, former DGP of Uttar Pradesh. Vikram, thank you for talking to us. A theft suspect dies in police custody in Agra, not before he was beaten up by 2 of his neighbors. So, violation of law and order at so many levels. This is the worst that can possibly confront a police officer: death in police custody as a consequence of torture. In spite of the repeated guidelines given by the Honorable Supreme Court to have CCTVs, the National Human Rights Commission, the State Human Rights Commission, not to touch the accused ever. It is tragic that the police chooses not only to touch but to brutalize and extract confessions from the accused. This should never have happened, and I apportion the blame also not only to those who were in the police station, but also to those who were supposed to ensure proper rule of law and implementation of systems and procedures in the police station level. This obviously was given the go-by, and the person was tortured and brutalized obviously at the behest and on the instructions of the complainant. Now, one thing that has happened is that a case of murder has been registered and the entire police station has been suspended. This is a matter of satisfaction. But I would rather that the investigation be completed in the next 7 days, charge-sheeted, and those directly responsible for the torture should be not only be sent to jail, but dismissed from service also in the next 24 hours. Right, Vikram. And also, UP police is always in the news for all the wrong reasons. Fake encounters, fake arrests, and now this custodial death. Do you think there is an urgent need of complete overhaul of the policing system in UP? I couldn't agree with you more in the sense that a total reorientation, retraining, and also setting up the training in order and refurbishing of the UP police and faithful implementation of the Supreme Court guidelines, the guidelines given by the Director General of Police, the government, and the National Human Rights Commission. It is not rocket science to implement these, but the fact remains that the epidemic level of corruption that has gone into the DNA, that also needs to be checked. It is not in the interest of law and order that this man was brutalized. It was in the interest of their personal greed and corruption that he was brutalized. Unprofessional conduct. You also have the example of NIA, CBI, and the UP STF, where the technology has taken over
most of the investigation, one doesn't have to touch the accused to get to the facts of the crime. One just has to rely on technology, lie detector test, polygraph tests, electronic surveillance, and lo and behold, you have the result. But when you are untrained, you resort to shortcuts, and this is ultimately the nightmare that you inherit and the indignity to the department and to the uniform that you wear. Thank you, Vikram Singh, for all these inputs. And now I am being joined by Rakesh Tripathi of यूपी बीजेपी. राकेश जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया. आपसे ये जानना चाहेंगे कि यूपी पुलिस लगातार गलत कारणों की वजह से न्यूज़ में बनी रहती है. कभी फेक एनकाउंटर होते हैं, कभी फेक अरेस्ट होते हैं, और अब ये कस्टोडियल डेथ हुई है एक थेफ्ट अक्यूज्ड की आगरा में. क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं विक्रम सिंह जी को सुन रहा था. उन्होंने जितनी भी बातें कही हैं, मैं उनकी बातों से 100% सहमत हूँ. जिस तरह से ये ब्रूटल मर्डर हुआ है, इस मर्डर में किसी भी तरह से कोई उदारता उनके साथ नहीं बरती जाएगी. जो कठोरता एक अपराधी के साथ रखी जाती है, वही कठोरता इन पुलिस कर्मियों के विरुद्ध भी रखी जाएगी. पूरे मामले की फ्री फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी और जो कठोर से कठोर सजा मिल सकती है अदालत के माध्यम से, न्यायपालिका के माध्यम से, वो सजा इन्हें जरूर दिलाई जाएगी. क्योंकि सुरक्षा कर्मियों पर यह दायित्व है कि वो आम जनता को सुरक्षा मुहैया कराएं. और कस्टोडियल डेथ का होना या पुलिस के द्वारा किसी को गोली मार देना, इसको उत्तर प्रदेश की वर्तमान योगी आदित्यनाथ सरकार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी. ऐसे पूरे मामले में जितनी तत्परता से कार्रवाई की अपेक्षा है, उतनी तत्परता से सरकार ने कार्रवाई की है. बावजूद इसके अगर पीड़ित परिजनों को किसी भी प्रकार की सरकार की इन्वेस्टिगेशन में कोई आपत्ति होगी, तो वो जैसे इन्वेस्टिगेशन की अपेक्षा करेंगे, सरकार वो इन्वेस्टिगेशन देने में पीछे नहीं हटेगी. जी राकेश त्रिपाठी, और अभी तक 3 पुलिस वालों को इस केस में सस्पेंड किया गया है. क्या यही कड़ी कार्रवाई हम उम्मीद रख सकते हैं योगी सरकार से, उसके अलावा कुछ नहीं? नहीं, ये केवल प्राथमिक कार्रवाई है. ये अब से समाप्त हो गई है कार्रवाई, ऐसा नहीं है. ये प्राथमिक कार्रवाई है. इसमें जितने भी एक क्रिमिनल मामले में कार्रवाई होती है, जिस त्वरित गति से होती है, स्फूर्त गति से होती है, उतनी ही त्वरित गति से होगी. मैं इतना स्पष्ट कर रहा हूँ कि अपराध अगर किसी पुलिसकर्मी ने किया हो या किसी अपराधी ने किया हो या किसी खद्दरधारी ने किया हो, उसके साथ किसी भी प्रकार की मुरब्बत नहीं होगी. अपराध की प्रकृति क्या है, ये देख करके तय होगा कि उसके ऊपर कितनी कठोर कार्रवाई हो. जी राकेश जी, और ये भी बात यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि यूपी पुलिस के रवैये पे लगातार सवाल उठते रहते हैं. किसी न किसी कारण से वो गलत कारणों की वजह से न्यूज़ में बनी रहती है. आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है यूपी पुलिस के साथ, यूपी पुलिस के कॉप्स के साथ, कि वो इस तरीके का रवैया अपनाते हैं और सोचते हैं कि वो कानून से ऊपर है? देखिए, मैं अगर इस पे कारणों पर कहूंगा तो निश्चित तौर पर मुझ पर आरोप लगेगा कि मैं राजनीतिक बयानबाजी कर रहा हूँ. लेकिन वास्तविकता में ये सच है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती में व्यापक पैमाने पर जातिवाद के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर और पूंजी के आधार पर उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्तियां होती रही है. उत्तर प्रदेश में पुलिस का प्रमोशन जाति के आधार पर होता रहा है. इस कारण से आज पूरा पुलिसिया सिस्टम एक बिखराव की स्थिति में था, जिसको आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पिछले 18-19 महीने में लगातार कसने का काम किया है. हमने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया है. लगभग 900 पुलिसकर्मियों को हमने निलंबित किया है. लगभग 19 पुलिसकर्मियों को हमने सेवा से बर्खास्त करने का काम किया है. ये संख्या जितनी बढ़े, हम इससे पीछे नहीं हटने वाले हैं. उत्तर प्रदेश को एक पारदर्शी प्रशासन देने के लिए हम पूरी कठोरता करने वाले हैं. जी राकेश जी, यूपी के लोगों को भी इसी कड़ी कार्रवाई का और यूपी पुलिस पर लगाम लगाने का इंतजार रहेगा. थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस.